Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the quarantine series. I know the count today. Today is the 50th episode. It's been quite a ride doing this. मैंने बहुत सीखा है, कोशिश की है कि जिनका मैं फैन हूँ, जिनसे मेरी दोस्ती है, उनके ख्यालात हम आसान ज़बान में सबके लिए मुमकिन बना सकें और आपके रिस्पॉन्स ने ये यकीनन मुझे बताया है कि हम तैयार हैं, हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहते बल्कि डायरेक्शन चाहते हैं और डायरेक्शन वही बता सकते हैं जिन्होंने वो किया है, हमसे बेहतर किया है, गलतियां की हैं हमसे पहले और हमें गाइड कर सकते हैं। आज का मौजू है पिच इट टू विन इट। आज ताक रातों में से एक ताक रात है। आप सबको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेस कि आप शब को पा सके, जिसके बारे में बेजा ताकीद है, बेशुमार जगहों पे इंस्ट्रक्शन है। और अगर इस रात में कुछ इल्म भी शामिल हो, अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाना भी शामिल हो, तो यकीनन मेरी नज़र में उसकी भी रहमतें हैं, उसकी भी बरकतें हैं। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रही हैं समर हसन। समर जो है वो she is quite I would say quite a powerful female character in the entrepreneurial community, and I say that because I believe in the young ones, and especially the young ones who come with a very clear why. She is driven to create positive impact. She's been working in the field of entrepreneurship, higher education, financial inclusion, democracy, governance, and international relations since 2003. So good time spent. She's co-founded Epiphany, which is a catalyst for promoting impact and social entrepreneurship in Pakistan. Not just entrepreneurship, social entrepreneurship. सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि इम्पैक्ट जनरेट करना। एपिफनी बहुत ही मजेदार इदारा है, बहुत ही थॉटफुल काम करते हैं। ग्लोबल टाइम टेस्टेड करिकुलम है जिसको रोल आउट करते हैं ऐसे अंदाज के अंदर के पार्टिसिपेंट्स इंगेज्ड हों, एंटरप्रेन्योर्स ग्रो कर सके एज बिजनेसेस। खास तौर पे फोकस करते हैं उन बिजनेसेस पे जिन पे पोटेंशियल मौजूद है, स्केलेबल है। Epiphany helps businesses secure pre-seed and seed funding. Another challenge for startups, for businesses, is to acquire funding, so investor friendly होना और investors तक पहुंच पाना। इसके अलावा बेशुमार बूट कैंप्स हैं, हैकाथॉन्स हैं, जहां सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का नाम आपको नजर आएगा, वहां आपको समर का नाम जरूर नजर आएगा पाकिस्तान में। आई एम very happy that she has joined us for the 50th episode. Thank you, Samar, for being on the show. Thank you very much, Umair, and what a powerful introduction. अब इसके बाद मुझे क्या कहना है? Thank you so much for having me. नहीं, अब इसके बाद आपने सिखाना है। I can. मेरे इंटरनेट में लैग है तो आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। मेरी आंखें जरा इधर-उधर जाती है because I manage the comments and the questions and a bit of commentary. But it's great to have you. Thank you very much. Thank you very much for having me. Pitch it to win it पे आएंगे, लेकिन पहले जरा बता दें how is the corona lockdown for you? So initially, I would say maybe a week or so was a bit tough, right? Because obviously it was something which was new, which was happening for the first time. पहली दफा इससे पहले कभी हुआ नहीं है, तो obviously थोड़े से चैलेंजिंग था। लेकिन क्योंकि मैं आप एक कम्युनिटी बिल्डर हैं, डिफरेंट लोगों को रीच आउट करते हैं, कोच, ट्रेनर, एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मुंसलिक हैं। सिमिलरली एपिफनी की बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, यंग पीपल भी हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो उनके लिए फिर जब आप कोई कम्युनिटी लीड कर रहे होते हो, सो यू काइंड ऑफ जस्ट से अच्छा ओके चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वी हैव टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस एंड रियली स्टार्ट हेल्पिंग अदर पीपल, राइट, द कम्युनिटी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ। सो आई थिंक इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स हमने जो था बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स करने शुरू कर दिए। सो जो आप स्ट्रीम यार्ड का बता रहे हैं, इट्स बीन अ टेक्नोलॉजिकल लर्निंग कर्व एज वेल, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि आप फेसबुक तो चलो एवरीबडी वाज यूजिंग इट, लेकिन ये स्ट्रीम यार्ड, जूम, कहाँ से लाइव स्ट्रीम होगा, कैसे कमेंट्स मैनेज होंगे, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस भी थे आई थिंक। बट आई थिंक ओवरऑल जो आपका दूसरा वाला जो पॉइंट था, राइट, लर्निंग, इमेंस लर्निंग। सो ये जो 1 महीना 1.5 महीना गुजरा है, इसके अंदर हमने भी बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स किए हैं। एपिफनी टॉक्स का एक सेशन करते हैं हम, ऑलमोस्ट एवरी वीक वी डू दैट, देन वी डू आस्क मी एनीथिंग, which is essentially कोई भी जैसे आपकी तरह पे accomplished person, उसको हम लेके आते हैं different topics के ऊपर, and you can ask them anything that you like, anything about their personal and professional career. इसी तरह we've been running office hours. सबसे पहले तो हमारा जो immediate response था वो office hours था, because entrepreneurs, especially जो social entrepreneurs की बात करते हैं, सबसे badly hit I think social entrepreneurship थी। Opportunities भी बहुत थी उसमें, हमने कुछ startups को देखा भी हुआ,
लेकिन ऑफिस आवर्स के थ्रू हम उनकी बातें सुन रहे थे. A lot of it was just listening, offering moral support, and then also offering strategic advice कि अभी करना क्या है, पिवट करना है तो कैसे पिवट करना है, डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो कैसे डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड की जाए, और अब के हालात को और आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए. So I think long answer to your COVID question, लेकिन it's been a learning ride. By the way, we also हमारी third anniversary Epiphany की it happened on April 17th during the lockdown. तो वो भी हमने virtually celebrate की थी with some friends. One of us just came in एक चाय का mug लेके, but that was very interesting as well. Okay, we see you're back. I am seeing Sorry, two I of you missed right out now. on a few, but I'm not gonna make you. I'm sorry I missed out on a few things. I'm not gonna make you repeat them, Samar. No But worries. I've been following Epiphany, you, and I think everybody is doing some fantastic work. Good. So leaders realize that everybody is in trouble. Something needs to happen. We need to move. We need to learn. आज की गुफ्तगू है pitch it to win it के हवाले से. समर वैसे तो बहुत सारे मौजूद सिखाती हैं, रिसर्च करती हैं, करिकुलम्स बनाती हैं, बड़े जाइंट एज प्रपोजल्स लिखती हैं. आपके मेरे बहुत कम लोगों के बस का काम है. लेकिन आज हम समर को खास लेकर आए हैं पिचिंग के हवाले से. नाउ what are we going to talk about, the questions that we have, I'm going to share them with you ताकि आप लोग मजीद सवालात में ज्वाइन कर सके. कुछ डेयरिंग लोगों को दावत भी है, आप आए, पिच लगाएं, समर आपको फीडबैक देंगी. we'll start with the Epiphany switch to understand about Epiphany more. फिर हम सीखेंगे कि पिच है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है. सिर्फ अच्छा काम इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उसको कम्युनिकेट करना, खास तौर पे पिच लगाना. व्हाट इज पिच, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू द एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी, व्हाट मेक्स फॉर अ गुड पिच. एक अच्छी पिच होती क्या है, सिर्फ दाद मिल गई, लोग खुश हो गए, वाह वाह हो गया, या उसके अंदर कुछ चीजें हैं. बैड पिच क्या होती है, यूजुअल चैलेंजेस हमारे एंटरप्रेन्योर्स के क्या होते हैं, फियर का क्या करें, इनसिक्योरिटीज, मैंने कभी किया नहीं है, पहली मर्तबा कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एंड लास्टली विनिंग पिच डेक्स किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि मिलते हैं लोगों से. और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्टर से मिलें, यू मीट योर स्टेक होल्डर्स, योर कस्टमर्स, a lot of people, and they always ask you, so what do you do, and your answer is that pitch. If you worked on it with somebody like Samar, I'm sure you'll give a much better response. So that's what we have on the palette. Please ask your questions in comments, and you can join us towards the end with the live questions. Samar, are we ready? Yes. Okay. Okay. So that 2 second lag I've just tested, that's gonna stay. Okay, so that 2 second, let that be. Let's get going. The first one is the Epiphany pitch. Tell us a little about it. All right. So, okay. So let me, because I am a trainer as well. ठीक है, तो अब I'm putting on my training hat because obviously लोगों को सिखाना है कैसे आपने pitch करना है, and pitching to win it, right? So depending on the audience, अब depend करता है कि audience क्या है, investor से मैं मिलने जा रही हूँ या मैं किसी client से मिलने जा रही हूँ, और client कौन है, development partner है जिसके पास मैं जा रही हूँ, या कोई entrepreneur है, या कोई university, etc. So it changes according to who I'm talking to. कहीं कहीं पे बहुत relevant होता है that I actually take a step back and start with the story. कहीं कहीं पे स्टोरी देने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, सो अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूंगी, आई वुड से कि एपिफनी इज अ कैटलिस्ट फॉर इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप. इसके 3-4 डिफरेंट चीजें हैं. कैटलिस्ट का माने ये होता है कि आप किसी भी चीज को फास्ट ट्रैक कर देते हैं, किसी भी चीज को आप स्पीड दे देते हैं. ठीक है, सो इन अ वे स्पेशली, और हम जब इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड that are actually doing that, और हम तकरीबन 360 डिग्री सोल्यूशन ऑफर करते हैं. सो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या आइडिएशन स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वो भी हमारे पास आ सकते हैं. अगर आप ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं तब भी आप हमारे पास आ सकते हैं. अगर आप हमारे फॉर्मल प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहते, यू जस्ट वांट सम एडवाइस, वी आर आल्सो ऑफरिंग कंसल्टिंग इन ऑफिस आवर्स के थ्रू. एंड रिसेंटली जो आपने मेंशन किया था इंट्रोडक्शन, वी हैव आल्सो स्टार्टेड ब्रिजिंग एक्सेस टू फाइनेंस का बहुत बड़ा गैप होता है स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए या सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए. तो हम काफी अरसे से सोच रहे थे, ये हमें प्रॉब्लम नजर आ रही थी, एंड इन द एंड वी जस्ट थॉट अच्छा चलो एंजल्स को, लाइक माइंडेड जो फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनको लेके आते हैं, एंड उनसे हम कहते हैं कि चलो जी ये एक स्टार्टअप है, दिस इज अ गुड मैच फॉर यू गाइस, लेट्स टर्न दिस प्रोफेशनल रिलेशनशिप into a financial marriage. Okay, so that's something that we have recently started doing. So ये कुछ चीजें जो कि हम करते हैं, acceleration, helping businesses grow, optimizing different businesses through different wide variety of consulting services. उसके अंदर pitch deck तैयार करना, strategic communications, finance
ड्यू डिलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मिलकर प्रिपेयर कराना, दिस इज समथिंग दैट वी रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग. सो ये सारी तमाम चीजें जो है हम करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स विद डिफरेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स वी कम इन. कभी कभी करिकुलम डिजाइन करना होता है, कभी कभी बूट कैंप ऑर्गेनाइज करना है, कभी कोई छोटी इंडिपेंडेंट वर्कशॉप करनी है. सो वी डू दैट एंड वी डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी इवेंट्स which are usually free for all. उसके अंदर Epiphany Talks is one, Ask Me Anything is another, Executive Paycheck is another. We're also starting Yeah. a new series on Instagram very soon. So, yeah, this is what we do. Wonderful. Catalyst is the word I've held on to. कि Yeah. रिएक्शन हो रहा है उसको तेज बना रहे हैं एपिफनी. स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, दोस्त यार भी मौजूद हैं. एपिफनी उस लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करता है और ना सिर्फ लिंकेज को बल्कि उसमें कंटेंट इंसर्ट करता है और कम्युनिटी एक वीव की है. वंडरफुल, ग्रेट टू नो अबाउट एपिफनी. मे यू डू वंडर्स, कीप एट इट, एंड वी नीड मेनी मेनी मोर लाइक यू एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू. पिच के ऊपर आते हैं. सो व्हाट इज अ पिच, समर, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, बेसिकली जो आपकी पिच है ना, पहला कदम है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. तो आपके जो भी मकासद हैं, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है अपना आइडिया बयान करना है. जो आइडिया बयान करने का प्रोसेस है वो पिचिंग है. ठीक है, अब वो पिचिंग ओरल भी हो सकती है, वर्बल हो सकती है, या वो प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में हो सकती है, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकती है. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है. लेकिन पिचिंग एसेंशियली इज गोइंग टू बी द वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आइडिया. अच्छा, वो इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सो जब आप इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए जा रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? मनी हासिल करना. ठीक है, आपको फाइनेंस चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो वो डिफरेंट एक आपने पिच प्रेजेंट करनी है. जब आप कस्टमर्स के पास जाएंगे तो कस्टमर्स के लिए डिफरेंट पिच होगी, पार्टनर्स के लिए डिफरेंट होगी. आपके जो को फाउंडर को जब आप तलाश करते हैं, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काफी दफा सवाल भी आता है यंग एंटरप्रेन्योर स्पेशली, या फिर इवन अगर वो सीनियर एंटरप्रेन्योर्स है, को फाउंडर्स की लड़ाई हो जाती है अपने आप को पड़ेगा ना. तो सो ये को फाउंडर्स हैं या टीम के लिए अगेन योर पिचिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. उसमें बोर्ड मेंबर्स भी आ जाते हैं. सो एवरीथिंग रिक्वायर्स यू टू बी एबल टू एक्सप्लेन योर पर्पस. आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 3 चीजें. ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैंने जंप लगा दिया. वंडरफुल, जंप लगा दिया, लेकिन उससे पहले जरा होल्ड आपके में इसको कम्युनिकेट करना चैनल हो सकते हैं एज वी हैव लर्नड, और उसके एस्पेक्ट्स क्या है उसको हम मजीद खोल रहे हैं. आपके कमेंट्स, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज वी विल इंटीग्रेट देम एट द राइट टाइम. यस शफीक, द गुड पार्ट इज के सारे लाइव सेशन सेव हो रहे हैं. पाकिस्तान के पास 1 साल का कंटेंट जनरेट हो गया है इस कोरोना लॉकडाउन की बरकतों से. अल्लाह में उसे देखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. समर, what makes for a good pitch? आपने थोड़ा सा हिंट किया कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है. लोगों की तवज्जो आपने हासिल करनी है. वो आप कैसे करेंगे? अब आप इमेजिन करें कि आप एक मछेरे हैं. मछेरा क्या क्या फेंकता है पानी के अंदर? हुक फेंकता है मछली को पकड़ने के लिए. ठीक है, सो जो कोई भी आपका ऑडियंस है वो आपकी मछली है, और आपने एक हुक फेंकना है ताकि वो आपकी बात आपकी तरफ आना शुरू हो जाए. he or she is attracted towards you. ठीक है, सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट इज द बेसिस ऑफ ए गुड पिच. जो शुरू के, मुझे नहीं मालूम कि हमारी ऑडियंस को ये पता है, लेकिन जो पहले चंद सेकंड होते हैं, पहले 7 to 10 सेकंड्स, ये एसेंशियल होते हैं कोई भी बात किसी की भी तवज्जो हासिल करने के लिए. तो अपने अटेंशन को, आपने अपने जो क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, जो कोई भी आपकी ऑडियंस, आपने उसको घेर लेना है. ठीक है, फिर जाने नहीं देना. तो पहले 7 सेकंड्स डोरे डालने पहले 7 सेकंड में, बहुत जरूरी चीज है ये. ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब वो कैसे कर सकते हैं? जो हुक है आपका, वो हुक एक सवाल भी हो सकता है, एक स्टैटिस्टिक भी हो सकता है, कोई फैक्ट आप बयान कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हुक होता है, और ये आई maybe I wish that the audience was also right there so we could see them and I could just ask them a question. लेकिन जो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो एक कहानी बयान करना होता है. So a story is what will stay with people. एक कहानी जब होती है वो आपके साथ हमेशा रहती है. आपको फैक्ट भूल जाएगा, आपको शायद जो डू यू नो का जो क्वेश्चन है वो भी शायद भूल जाएगा. ठीक है, बट आपको स्टैटिस्टिक याद रह जाएगी, आपको स्टोरी याद रह जाएगी. अच्छा, अब जो स्टोरी है उसमें हमने
है सबसे पहले अपना रीजन, जो रैशनल है, जो वाई है, आप ये क्यों करते हैं वो बयान करें, बिकॉज दैट स्टिक्स, दैट हैज स्टिकीनेस वैल्यू। ठीक है, पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। ठीक है, मतलब आप इतने पागल क्यों हैं? अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप का भूत क्यों सवार हुआ, फॉर इंस्टेंस, अभी तक लोग पूछते हैं। ठीक है, सो वो जो कहानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लेट मी क्विकली शेयर एपिफनी की कहानी। सो आई थिंक हमें नजर आ रहा था बहुत अरसे से कि ओके, कम्युनिकेशंस के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर, डेवलपमेंट कंसल्टिंग के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं जो कि एक अच्छी बुटीक कंसल्टिंग फर्म उसको फुलफिल कर सकती है। लेकिन एपिफनी डिडंट कम टू लाइफ बिकॉज वो जो मकसद था, वो जो पर्पस था, वो मिसिंग था। अच्छा, वो कैसे आया? आई यूज्ड टू बी एट कारन एंड दिस लेडी हु आई गॉट टू नो थ्रू अ कॉन्फ्रेंस, उनसे मैं कभी मिली नहीं थी, अब वो मेरी एडवाइजर भी है। ठीक है, मतलब शी बिकेम एन एडवाइजर इवन बिफोर आई मेट हर। सो शी वांटेड टू हैव एन आर्टिकल ऑन वुमेन इन बिजनेस। ठीक है, जो विमेन बिजनेस रन करती है पाकिस्तान में, वो एक आर्टिकल जा रही थी। पहले वो कारणदास का चाह रही थी, बट कारणदास रेडी नहीं था। हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, काम किया था विमेन की साइड पे। So I said, अच्छा चलो, I'll do a little bit of research. सिर्फ 1200 words से, but I ended up talking to different incubators, accelerators से बातें की, women जो entrepreneurs थी उनसे बातें की, और पता चला कि okay, women entrepreneurs के पास तो कम support है ही। उस टाइम पे women X का प्रोग्राम रन होता था, एक वो होता था, एक स्टार्टअप एकेडमी होती थी। अभी तो माशाल्लाह within the last 3 years बहुत सारा सपोर्ट है, बट women entrepreneurs का मुझे नजर आया एक बड़ा गैप है। दूसरी तरफ क्या नजर आया कि social entrepreneurs के लिए तो 2 या 3 प्रोग्राम्स हैं, that's it। ठीक है, मतलब you could literally count them on one hand. So we thought, okay, this is what we need to do, and I thought ये है जो मेरा मकसद है। Hence the name Epiphany as well, by the way, क्योंकि Epiphany के माने हैं वो ऐसा मोमेंट, वो ऐसा टाइम जब आपको अचानक से सडन रियलाइजेशन, आपको अचानक से कोई चीज वाजे हो जाती है। मेरे केस में था कि अच्छा, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो एनीवे, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। ठीक है, आप बहुत लकी हैं, आपके केस में अचानक से बहुत अच्छी चीज आई जिसका नाम एपिफनी ही रख दिया आपने। बट जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समर ने बात की है, याद रखें कि सिर्फ आप जो करते हैं वो नहीं, बल्कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं, वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। गो ऑन समर। ठीक है, सो आपने अब स्टोरी बता दी, आपने व्हाई बता दिया, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि व्हाट यू डू। ठीक है, कि उसके जो नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा आप करते क्या है। सो मैंने आपको इतनी कहानी सुना दी, उसके बाद बता दिया, आपने पहले बल्कि बता दिया था कि हम करते क्या है और कैसे करते हैं। दैट्स द थर्ड स्टेप, हाउ। राइट, सो 3 थिंग्स, व्हाई, व्हाट, हाउ, सिंपल। राइट, एंड इफ यू गो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे और साइमन सिनेक को सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा मटेरियल भी मिल जाएगा। सो वन ऑफ द थिंग्स, फॉर इंस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रांड बनना चाह रहे हैं, आपने व्हाई शेयर करना है। ठीक है, if you want to be a brand, otherwise you're just going to be anybody। बस आप, अगर आपने ब्रांड बनाना है, that is important। वरना अगर आप सिर्फ अपने फीचर्स बताते जाएंगे, वो तो वो तो बहुत सारे हैं इस तरह के। ठीक है, आपने मतलब आई डोंट नो बैड एग्जांपल, बट आपने मंजन बनना है, आपने डेंटोनिक बनना है, whatever। ठीक है, so you have to kind of figure out what it is that you want to do। सही, इसकी एग्जांपल थैंक यू वाटर। सो थैंक यू, एक्चुअली thankyou.co पे अगर आप जाओगे, उसके अंदर इट्स एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज। बेसिकली वो क्या करते हैं, पानी बेचते हैं, बट बहुत महंगा बेचते हैं। ठीक है, क्यों बेचते हैं और क्यों बेच पाते हैं? क्योंकि सारे के सारे जो प्रॉफिट्स है वो ग्लोबल पॉवर्टी को एंड करने के लिए लगा देते हैं। सो अगर आप उनके अबाउट अस के सेक्शन में जाएंगे, सिंपल स्टेटिस्टिक्स, दे टॉक अबाउट देयर इज डार्कनेस इन आवर वर्ल्ड, 767 million people live in extreme poverty। It's made darker by the fact that in the same world, extreme consumerism exists। There you go, perfect। How I was thinking how to share the screen। About के ऊपर आप देखो, yes, there you go, and our story। So if you look at it, very simply written, and why do they exist? Why thank you। ठीक है, छोटा सा इन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। सो जब आप पिचिंग की बात होती है, यू आर ऑल्सो यूजिंग योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर रहे होते हो अपने बिजनेस को पिच करने के लिए। तो द लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपकी टोन है, वो बहुत ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, कि आप जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, सिंसेरिटी, दैट नीड्स टू कम आउट। हम काफी दफा क्या करते हैं, अल्फाजों में छुप जाते हैं। हम किसी और से कंटेंट लिखवा लेते हैं, फिर सोचते भी नहीं है कि उसको एक दफा पढ़ लें, ये वाकई में वही है जो हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब words don't have to be your powerful thing, but you know your mission। Nobody else can
say that as well as you can. So भले आप किसी और Yeah. से लिखोगे, you have to read it again. You have to make sure कि essence उसके अंदर मौजूद है. ठीक है? अच्छा जी. Very important. So I would say that these are certain things. ठीक है. अच्छा फिर क्या important है? Structure of the pitch deck is important. अगर आपने कहानी से शुरू किया, फिर आपने जंप लगा दी, कस्टमर्स की बात कर दी, फिर जंप लगा के वापस चले गए, मार्केटिंग की बात आ रही है, फिर कंपटीटर्स की थोड़ी बहुत आपने डिस्कशन की, फिर फाइनेंशियल्स पे गए, फिर वापस कस्टमर्स पे आ गए, फिर आपने कहा नहीं सॉरी एक सेकंड पीछे जाना था, ठीक है, नहीं आगे जाना. डोंट डू दैट. ठीक है. ट्राई टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपर्ली. और उसके अंदर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास एक बहुत आसान है. What you're going to do is that's a 4 kind of step format. The why, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन की एक साइड के अंदर या एक इसके अंदर आपने बता दिया छोटे से थोड़ा से अल्फाजों में, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है. फिर आपने क्या किया, द व्हाट, आपकी जो सोल्यूशन है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप करते क्या है. ठीक है. फिर इट वर्क्स, आपने थर्ड क्या चीज दिखाई, आपने दिखाई कि ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि क्या उसकी कितने लोग हैं जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, कोई कॉम्पिटिशन से आपने जीत लिए हैं, या आपके कितने कस्टमर्स. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो कॉम्पिटिशन से वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय द वे दिस इज अ मैसेज फॉर यंग स्टार्टअप्स. ठीक है. मतलब इट डजंट मैटर इफ यू वन 100 million competitions as long as you don't have any customers. So ideally, especially अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख करना चाह रहे हो, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके पास कितने वेंडर्स, कितने सप्लायर्स, कितने कस्टमर्स हैं. वेंडर्स एंड सप्लायर्स का इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज काफी सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं आजकल, ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं. सो ई कॉमर्स के अंदर आपके जो एक साइड पे जो आपके वेंडर्स हैं, जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी साइड पे आपके कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो ट्रैक्शन आपने बता दी, तो उसमें पता चल गया हमें कि अच्छा इट वर्क्स. ठीक है. अच्छा सोशल प्रूफ में और एक और चीज आप क्या दिखा सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे team board members for instance, right? That becomes really important. So you can show कि आपकी अपनी जो टीम है बेशक वो छोटी है, लेकिन आपके पास कितने important लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा मुझे हंसी आ गया because I can see a very sweet comment from Sana. Okay Sana, I want to know more about you as well. अच्छा final क्या है pitch के अंदर, the opportunity. So the opportunity is Wonderful. what? जो आपकी ask है, आप क्या चाह रहे हैं from this presentation. जो हमने शुरू में बात की थी कि आपका मकसद क्या है. So एक तो ये option होगी which is a 4 slide kind of very simple presentation. Then the other option is something by Guy Kawasaki. ठीक है. Again I'm happy to write his name. अभी मैं लिख देती हूँ comments के अंदर ही. Guy GUY Kawasaki, जिसका 10 slide format है. Again it starts with a problem क्या है. Number 2, what's your solution? Number 3, आपका business model क्या है? How are you going to make money? Number 4, technology, magic, जो भी underlying जो magic या technology वो क्या है? Number 5, marketing and sales कैसे करेंगे आप? Competition क्या है? Competitor analysis बहुत important है. Next team आ जाएगी. फिर projections and milestones आ गया. Status and timeline, कब आपने शुरू किया था? What have you accomplished so far? जो हम traction या social proof की बात आ गया. And summary and call to action. So you'll notice whether it's a 10 format that you look at or slide format, काफी सारी उसमें similarities हैं. Wonderful. Thank you for that. I was just looking at it alongside. इनको link चाहिए वो भी देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने वाला काम है जो खास तौर पे इसको apply करेंगे तो ही मजा है. You understand that. So please do that. The link is Guy Kawasaki's. Just look up 10 slides and you will find the format that Samar is talking about right now. Here is the link. It's also in the comments. Samar, you want to add anything to this or should we go to what does a bad pitch look like? I think we should jump to what does a bad pitch look like. ठीक है. Yes, please थोड़ा सा मिसालों से क्योंकि आपने इतने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है खास मौकों पे फुल तैयारी के साथ. अच्छा sorry एक second Umair, even though we said we could jump to the what is a bad pitch, I actually wanted to give you a couple of examples. So for instance एक हमारी entrepreneur है, उसका नाम है रुमेला हमीद. She runs this very brilliant startup called Self Management Training, SMT. She lost the power to walk in the 2005 earthquake. ठीक है. So last time around जब वो हमारे demo day पे pitch करी थी, she came on the stage and she said to everybody in the audience, आप please खड़े हो जाए. ठीक है. And everybody stood up. Then she said, please say thank you that you're able to stand because she's unable to walk. And that I cannot tell you how powerful that was. So sometimes it is something like that.
अच्छा, एक और हमारा स्टार्टअप है, अगेन वी कॉल आवर स्टार्टअप्स लिटिल एपिफनीज, ओके, सो आई एम डूइंग शेमलेस मार्केटिंग फॉर देम. नैनो हाइव, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, उसने थिएटर किया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा थिएटर किया. एंड अगेन आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड दैट पीपल नीड टू वॉच नेटफ्लिक्स के ऊपर जुम्बो, जुम्बोज डिसर्ट्स. आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट जिस तरह का वो Zumbo. जुम्बो, ठीक है, ZUMBO, जुम्बोज डिसर्ट्स, ओके. So take a look at it because the way he does theater around the beautiful dishes that he creates, वो बहुत ही खूबसूरत desserts बनाता है. और जिस तरह उनको अनवेल करता है, उनके ऊपर से ढक्कन उठाता है, जैसे उसमें से कभी कभी धुआं निकल रहा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. You have to do sometimes theater. So coming back to Nano Hive, Nano Hive एक social enterprise है based out of Peshawar. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मटेरियल बनाया नैनो टेक्नोलॉजी को इम्बेड करके, which is heat Wow. resistant. ठीक है, तो वो उसको यूज करना चाह रहे हैं टू क्रिएट पेंट, ताकि आपके जो हाउसेज हैं वो भी हीट रेजिस्टेंट हो जाए, ऑफिसेज भी एक्सेट्रा. तो उसने क्या किया कि लिटरली काइंड ऑफ लाइक आटा आटा गूंद के वो लेके आया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको फायर लगाया इन फ्रंट ऑफ द जजेस, एंड he lit it, he lit his finger जिसके ऊपर वो मटेरियल लगा Wow. हुआ था, फायर, ठीक है, एंड देन he said देखो मुझे कुछ भी नहीं हो, just this is heat resistant. Wonderful. So But demonstrating it, an act there. absolutely, so वो Yeah, true. एविडेंस, ठीक है. अच्छा, रुमेला ने क्या किया था एक और पिच के अंदर, रुमेला अपने साथ अपनी एक जो ट्रेनी है उनको लेके आ गई. सो द ट्रेनी वाज वाउचिंग फॉर हर, राइट. एंड हमने ये देखा है डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काफी दफा बेनिफिशियरीज होते हैं जो कि वाउच करते हैं आपके प्रोग्राम की वैल्यू के लिए. सो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो ऑलराइट, व्हाट इज अ बैड पिच, ये अब नेक्स्ट हम कहना चाह रहे थे, राइट. हाउ कैन आई Before that, चैलेंज. Irfan Tayyab says that I pitch to very senior executives, and that's a different ball game. They fly at a very different altitude. We understand that startups versus organized corporate, they work differently. But would you like to advise something to Irfan? How can he challenge them without disrespecting and get the point across? Because that's sometimes the case with the investor or a difficult stakeholder as well. You don't want to be disrespectful, but you want to get your point through. Absolutely. So look, one of the things is of course you have to listen. सबसे पहले आप उनका point of view अच्छी तरह सुन लें without getting defensive. क्योंकि अगर आपने समझा नहीं होगा उनका point of view, आप अच्छे से answer नहीं कर पाओगे, right? So you will be shooting in the dark. तो एक तो ये, that's a simple thing. The other thing that you can do is please find research to back your facts. जो भी आप बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट आप उनसे मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहते हो कि we're not going to make all of these, we're not going to spend so heavily on electronic media anymore. टीवी के ऊपर इतने ज्यादा नहीं करेंगे, केबल टीवी एंड अदर टीवी, राइट. स्पेंड सो मच मनी, वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्पेंड ऑन इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है. और उनको समझ नहीं आती बात, बिकॉज उनको इन्फ्लुएंसर्स नहीं समझ आते हैं. जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर तो 20 लाख या 40 लाख मांग रहे हैं, व्हाई शुड वी गिव इट टू देम और व्हाटएवर, ठीक है. You have to then show them before you go to them to look at how the reach is going to be phenomenal if you use this particular influencer or these, take a set of influencers. So what I'm trying to say is to back it with research, go armed with facts. The other thing that you can do is obviously examples, ठीक है. Also another thing that you could potentially do is take a look at your competitors. काफी दफा जो corporates होते हैं, they are looking all the time कि उनके competitors क्या कर रहे हैं, because they have to beat them. So I think again this could be another way to do it. Art So of negotiation. listen, research, have examples, and then art of negotiation. It's a book. Are you? No, I'm actually referring to, there's another workshop that I do on art of negotiation. Okay, so there are other things as well. Your body language really matters. How you're conducting yourself in the meeting. आप डर के अपनी बातें बता रहे हैं, आप लड़ के अपनी बातें बता रहे हैं, आप हंस के अपनी बातें बता रहे हैं, बहुत ही तहम्मुल से. There's a difference, right? Are you going in with a full-fledged power pose? Are you going like a meek little, छोटे से mouse बन के? बहुत फर्क है, ठीक है, हर चीज के अंदर. तो बहुत सारी चीजें जो कि मैटर करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. सो these are just a few things. Thank you. Few things, but few very very accurate things, I would say, and very well grounded things that somebody is suggesting. These are the things that we see happening. People who come in don't have the research, are not listening. So good that you're converting that. What does a bad pitch look like? सो बैड पिच, एक तो इतना लिखा हुआ होता है, इतना कुछ लिखा हुआ होता है, इतना कुछ कह रहे होते हैं, सब कुछ बताना होता है, ठीक है. मिनट 4 होते हैं या 5 मिनट है, जितने भी हैं, बट थोड़ा टाइम है. जो आपकी ऑडियंस है उसके पास थोड़ा सा टाइम है, स्पेशली हम जैसे भी कोविड की बातें करें, इतने सारे ऑनलाइन सेशंस है, राइट. अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर टू लिसन टू इट. तो हर चीज पे एप्लीकेबल. सो बहुत ज्यादा बोलते हैं,
बेतुका बोलते हैं, जब आप ज्यादा बोलते हैं ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है. So too texty, if we're talking about a slide format, let's not have so much text. तो जब फिर क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा टेक्स्ट होता है. So font size, try and limit it, have at least minimum आप 28 font size रखो या 30 font size रखो, ठीक है. Less words, explain it, ठीक है. जो words हैं आपके पास ना छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, you can have flash cards with you, right? So keep them in front of you अगर आपको लगता है आप भूल जाते हो इन स्टफ, लेकिन स्लाइड के ऊपर हर कुछ नहीं होना चाहिए. अच्छा, फिर क्या करते हैं, they spend too much time focused on the प्रॉब्लम ऐसे बताते हैं, ऐसे बयान करते हैं कि मतलब आप रोना शुरू कर देंगे, आंसू बहा बहा के पूरा दरियाए सिंध बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, ठीक है. बट व्हाट विल हैपन इज कि उसके बाद जब आप उससे पहले उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की भी होती है, इसलिए वो ऐसे बताते हैं. प्रॉब्लम दे वांट टू मेक श्योर दैट the problem is like sitting in our heads completely. But they didn't come to you. They didn't come to you before going to the stage. That's the important link. So a very important point. प्रॉब्लम ना बेचे, अपना हल बेचे, ठीक है. ये बता दें कि आप प्रॉब्लम समझते हैं. एब्सोल्युटली, ठीक है. बिकॉज आपके पास वक्त अगर मतलब टाइम बाउंड है ना, देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू गॉट. इफ यू स्पेंड टू मच टाइम, अगर बहुत ज्यादा डेडिकेट कर दोगे एक्सप्लेन करने में, तो सोल्यूशन का प्रॉब्लम थोड़ी सी देर के बाद हमें समझ आ जाएगा, ठीक है. तो हमें वी वांट टू नो द आंसर्स, वी वांट टू नो द सॉल्यूशंस दैट यू आर ट्राइंग टू कम अप, ठीक है. अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम होती है वो है कि काफी दफा टेक्निकल, यू बिकम टू टेक्निकल. जो आपकी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है या जो आप टेक्निकल बिट है, इंजीनियरिंग आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको आपने डम डाउन करना है अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग द इन्वेस्टर्स आर सिली, आई एम नॉट सेइंग द जजेस आर सिली, ठीक है, और योर कस्टमर्स आर सिली, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है कि उनको क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स ऐसे समझ आती हो जैसे आपको, तो आपने उसको आसान तरीके से बयान करना है, ठीक है. अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, आप बहुत मोनोटोनस होते हो. अब आपके पीछे आपका बिजनेस है, बट यू आर सेइंग इट एज इफ यू आर सो बोर्ड. अगर आपको इतनी बोरियत हो रही है अपनी प्रेजेंटेशन करने में, तो फिर सोचेंगे वो ऑडियंस क्यों सुनेगी, ठीक है. अच्छा, मैं ये आई एम जस्ट गिविंग जेन्युइन एग्जांपल्स, दिस इज जस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो मैंने देखा है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता. सो आप आते हैं, अगेन यू आर शिफ्टिंग अराउंड, नर्वस टिक्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, वो होते हो, नीचे देख रहे होते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, ठीक है. दीज आर ऑल रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर एक्चुअली पिचिंग. द कॉन्फिडेंस दैट यू एक्सूड. अच्छा, कॉन्फिडेंस आता कैसे, जितनी ज्यादा दफा प्रैक्टिस करेंगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, फोन के ऊपर अपनी वीडियोस बनवाएं या खुद बना लें, उसके बाद देखें व्हाट आर योर नर्वस टिक्स, ठीक है. सो सम पीपल लाइक रॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम पीपल, आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट, राइट. सो आई वुड गेट नर्वस एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, I would keep doing it, ठीक है, without even realizing, right? Some people mumble, so वो बहुत important है कि जो आप communicate कर रहे हो समझ आ जाए. अच्छा, bad attitude, right? So this is something which I want to spend 1 second on. ये थोड़ा सा हमने अभी जो दूसरा सवाल आया था उसमें हमने देखा था. Bad attitude means कि आपसे कोई सवाल पूछ लिया है किसी ने और आप जो है वो लड़ने खड़े हो जाते हैं because it's your baby, right? The idea that you've got, whether it's a startup or even जो जैसे वो कह रहे थे किसी प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो, ठीक है. Yes, it is, but at the end of the day, coachability needs to come out. So, आपने क्या करना है, आपने criticism को absorb करना है. It's difficult, but nobody is criticizing your. So in a way, you have to distance yourself from your idea. Right? आपका idea आपसे फर्क है. अगर कोई आपके idea को question करे, वो आपको नहीं question कर रहा, आपके idea को question कर रहा है. So I think there is also that little friction that gets created and bad attitude नजर आ जाता है. So वो argue करेंगे. ये जो बहुत छोटी सी जो little friction है ना, ये बहुत मुश्किल से निकलती है. बहुत मुश्किल काम है ये निकालना कि आप, और बड़ी strength की अलामत है कि आप अपने ख्याल को अपने आप से अलग देख सकें और ख्याल पे जो feedback मिल रहा है, अगर आप grounded है तो आप उसको लाके उस पे काम कर सकेंगे. So very important there to be able to process the feedback that is coming. Go on, Samar. Competitor analysis is missing. Okay. So please do your research. If you देखा ही नहीं कि और कौन कर रहा है, देखा ही नहीं कि और क्या कर रहा है, आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, प्लीज मार्केट रिसर्च करें. हो सकता है ऐसे हजारों आइडियाज हो, ठीक है. अभी लास्ट वीक में कहीं पे जजिंग करी थी, तो अगेन इसी तरह की सिचुएशन थी कि उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं की हुई थी, जबकि 4-5 डिफरेंट स्टार्टअप से जो जजेस ने उनको बता दिया फिर. तो मतलब, एंड स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जजेस हैं, जो लोग आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज. उनके पास एक पूरा का मतलब इन अ वे हमारी ऑटोमेटिक रिसर्च हो चुकी हुई है. तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि अच्छा फूड बिजनेस
you're the only Uber of home cooked food. You're not, Yeah. right? So I mean, even in Islamabad there are more than one. So Karachi में तो और भी ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, फिर आप क्या करते हो कि proof of, हाँ, this is really important. So sometimes you've done amazing work. कभी-कभी ऐसे होता है, you've already done a lot of work. आपने मार्केट के अंदर वैलिडेट किया हुआ है, कस्टमर्स भी हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें आप कर चुके हैं, बट आप माइलस्टोन्स बताना भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर. So a आप क्या करते थे? timeline, you forget to tell us about all of the good things that you've done. जो आपने इतना सारा अच्छा काम किया होता है, वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम बहुत लंबी बता दी, आप भूल, you forget, and that is very powerful. जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, you know, you're giving evidence, right? कि मैंने ये चीजें चेक कर ली हैं, मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स थे, इतने रिपीट कस्टमर्स थे, भले आपके पास 200 कस्टमर्स हैं, बट उसमें से अगर 90% कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, that means आपके आइडिया में, आपके प्रोडक्ट सर्विस में कोई जान है, ठीक है? तो ये इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप पिचिंग करने जा रहे हो, वेदर इट्स फॉर पार्टनर्स, वेदर इट्स फॉर इन्वेस्टर्स. So these things are really important, ठीक है? And वेरी don't try to, इंपॉर्टेंट. ये जो आपने सॉरी, आप अपनी आखिरी बात कह दें. no, I was just saying, don't, it's applicable to me as well. I was just saying, don't try to say it all. Right Don't now, try to say it all. Less is more. Less less. is more. और पिच पे समर ने बात एम्फेसाइज भी की है. खास तौर पे ये अब जो मैं आपकी बात से आखिरी बात से गैदर कर रहा हूँ और आप ये कह रही हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी जो पिच है वो इवॉल्व होती रहती है और उसमें आपकी प्रोग्रेस शामिल होती रहती है. तो मैंने पहली पिच कर दी, उसके बाद मैं महीना चला हूँ, 5 कस्टमर से मिल लिया हूँ, कुछ फीडबैक है, तो मुझे उसको शामिल करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द रियल प्रूफ, validation that the investors are looking for. So is that what you're suggesting कि अपनी pitch को update करते रहें और what, why, how के साथ साथ progress और अच्छा, validation जो आपको मिली है? राइट, अपडेशन जो आपकी पिच है, अगर आपने पिछले साल दिखाई थी किसी कंपटीशन में, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, डोंट शो दैट सेम प्रेजेंटेशन, राइट? यू हैव टू शो अस सम प्रोग्रेस. आपने वो देखते रहना है, एंड आपने वो, यू नो, डिपिक्ट करना है अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है? ठीक है, wonderful. Thank you, Samar. Brilliant insights there. Very pragmatic advice. जो लोग अभी join in किए हैं, all these talks are available. You can look at it separately. जो साथ बैठे हुए हैं, आज हमने ये norm set नहीं किया, अगर अपने हाथ ऐसे करें और हाथ कीबोर्ड पे रखें और चलाएं, वरना आप पैसिव हैं. अगर आप मिल गए तो आप एक्टिव हो गए, आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी. अगर आप गुफ्तगू में शामिल होंगे, आपकी अपनी रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है. The best way to learn is to teach. So get going with whatever you have learned. We are challenging everyone, Samar and myself. Join us right now. The challenge is, अगर आप entrepreneur हैं तो यकीनन आप pitch तो करते हैं अपना business. Pitch now. And Samar will give you some feedback on the pitch that you make. 1 मिनट का हम आपको allowance देंगे, या दूसरा आप हमें join in कर सकते हैं अपने सवालात के साथ. There is something specific that you'd find out from Samar. Here is the link. I'm putting the same on the comments as well, so you can just click and join. मजा आएगा अगर आप में से कुछ लोग आके पिचिंग करें और उस पर थोड़ा सा फीडबैक लें, क्योंकि उससे शायद हम ऐसी चीजें भी कवर कर सकें जो कि शायद सिर्फ ऐसे गुफ्तगू में करना डिफिकल्ट होता है. When somebody does something, करने का यही फायदा होता है, जितनी भी मर्जी करे, जितनी भी बुद्धू हो, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि उस पर इस्लाह हो जाती है और इस्लाह सबकी हो जाती है. Thank you, Samar. The show goes on. We're talking about pitch it to win it, specifically for entrepreneurs when they go out to pitch their business ideas. Samar is a business consultant, has founded Epiphany, which does a whole lot of consulting services in the startup entrepreneurial ecosystem. Samar, would you like to highlight the usual challenges that our entrepreneurs face when it comes to pitching? So they're very interesting, ठीक है? कुछ internal challenges हैं जो हम खुद फेस करते हैं as human beings, ठीक है, जिनको हमने मात देना है, और कुछ external challenges हैं, ठीक है? For instance, internal challenge एक बताती हूँ आपको, and it's very interesting. Ambition, ठीक है? कुछ लोगों का इतना ज्यादा ambition होता है, वो आते हैं और कहते हैं हमने we are going to be the next Mark Zuckerberg and we are producing the next Facebook, but they can't substantiate it, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ क्या, it's a baseless ambition. On the other side, sometimes the ambition is too less. And this is a concern, ठीक है? Again and again हम बात करते हैं कि कब यूनिकॉर्न्स निकलना शुरू होंगे पाकिस्तान से, बार, ठीक है? Obviously early भी है, ठीक है? So बहुत सारे लोग जब ये सवाल करते हैं, you also have to realize ये entrepreneurship जो formal जिस तरह हम कर रहे हैं अभी National Incubation Centers वगैरह के थ्रू, ये limited है, ठीक है? अभी start हुई है, चंद साल हुए हैं, तो थोड़ा सा time चाहिए हमें. लेकिन at the same time, the other piece is ambition. So a lot of times, especially when I'm dealing with women entrepreneurs, when you talk to them, they're very happy कि वो थोड़ा बहुत
किचन चला लें घर का अपने बिजनेस से, ठीक है, तो वो एम्बिशन मिसिंग है। अच्छा, जब हम बड़े ब्रांड्स की भी बात करते हैं, कितने थे आपके इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन इंटरनेशनल, राइट? हमारी ज़ारा किधर है, हमारी मैंगो किधर है? हम टेक्सटाइल की कंपनी की कंट्री है ना, वी बीन डूइंग दिस फॉरएवर एंड एवर, किधर है वो? हमारी बरीजे ज़ारा स्कूल में है और हमारी मैंगो का बस टाइम हो गया है। या गुड वन, ठीक है, ओके फाइन, व्हाट अबाउट बरीजे देन, चलो मैं तो इट देखती हूँ। So what about see, so what But I'm trying to say is yes, कि you know honey for instance, ठीक है, हनी बी फार्मिंग होती है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, हमारे पास बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, वो किधर है वो सारे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो नॉट वो somehow or the other कहीं पे आके एक लिमिटेशन है जो हमने अपने ऊपर इम्पोज की हुई है। वी आर हैप्पी अगर हम नेशनल ब्रांड बन जाते हैं, वी वेरी हैप्पी, उसके बियॉन्ड हम नहीं देखते, but जब तक हम नहीं yeah. देखेंगे as a country we are limited. We're limiting ourselves as a country as well. So एक responsibility है on the startups. Yes, first grow in your city, in your province, फिर nationally expand करो, but then expand international. Have that ambition there, and then work towards it. And आपको लोग मिल जाएंगे, आपका ambition होगा ना, goals होंगे, और अगर आप रोज एक 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 step लेते जाएंगे, you will get there, right? Or you may even surpass it, and then you'll set एक और goal आप set करोगे after that, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या एक और बहुत बड़ा चैलेंज हम देखते हैं, टीम फॉर्मेशन। सो को फाउंडर अच्छा ढूंढना, अच्छी टीम तलाश करके उसको हायर करके रिटेन करना, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ, ठीक है। एंड सम ऑफ इट कम्स बैक टू इंटरनल बिट, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ्स है, आप क्या काम बहुत अच्छा करते हो, आपको वो करना चाहिए। जो आपका टीम मेंबर है, आपका फाउंडर है, बाकी जो आपकी टीम के लोग हैं, दे शुड प्लग इन जहाँ पे आप नहीं अच्छा काम करते। So for instance, if I'm not good at finance, I need to have somebody who can help me with the finance side. Right? If I like being the center of attention, लेकिन आपके बाकी सारे के सारे टीम मेंबर्स भी आपने अपने जैसे किए, तो आप लोग लड़ रहे होंगे। अच्छा, बाय द वे बैड पिच की एक और एग्जांपल इसी से आ गई, आप लोग लड़ रहे होंगे फॉर द स्टेज, राइट? सो एट टाइम्स आई हैव सीन पिचेस जहाँ पे सबके सब स्टेज के ऊपर उनको लगता है कि पुराने जमाने का वो एक थिएटर हो रहा है, वो सबके सब एक स्कूल के शो में Yeah. 2 लफ्ज उसने भी बोलने हैं, 4 लफ्ज दूसरे ने बोलने हैं, फिर एक सेंटेंस तीसरा वाला आएगा। डोंट डू दैट, राइट? Yes, पुट योर बेस्ट yes, फुट they फॉरवर्ड। sometimes founders fight on the stage as well. नहीं नहीं ये ऐसे नहीं एब्सोल्युटली, था ये, yes it was. So it's very important, और ये टीम जो उस वक्त नजर आ रही होती है, समर ये हिंट कर रही है कि यही टीम लॉन्ग टर्म में भी चलनी है, इसलिए ये फैसला बहुत अहम फैसला है कौन आपके साथ जुड़े। Like I love this line, they say the man is known by the company he keeps or he or she keeps, एब्सोल्युटली, but it's the other way एब्सोल्युटली, around, the company is known by the men and women it keeps, and एब्सोल्युटली, entrepreneur is building that company. So Samar is emphasizing very, very एब्सोल्युटली, important co-founders challenge. Samar, anything else that you would like to highlight in एब्सोल्युटली। this? बट जस्ट कमिंग बैक टू द टीम फॉर वन क्विक सेकंड एज वेल, ठीक है? और टीम Yes. बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हायरिंग मैकिंजी पीपल एक्सेट्रा, दैट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, आप नहीं कर पाओगे। सो आपकी जो टीम है जिसको आपने हायर करना है, उनको अंदर आपने एक सिमिलर वैल्यू सेट भी देखना है। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट दे आर गोइंग टू स्टिक इट आउट विद यू इवन व्हेन द गोइंग गेट्स रफ। अभी कोविड हुआ है, ठीक है? कितने लोग हैं जिनके जिनके एम्प्लॉइज आर एक्चुअली स्टिकिंग इट आउट विद देम डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद वो पूरे के पूरे उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल सकती है, शायद 3 महीने के बाद मिलेगी, शायद कट हो गई है, व्हाटएवर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? व्हेन द गोइंग गेट्स रफ, आपकी टीम मेंबर, यू आर ओनली एज गुड एज योर टीम इज, बॉटम लाइन, ठीक है? अच्छा, फिर नॉट नोइंग व्हाट यू डोंट नो, ये एक प्रॉब्लम आती है बार बार कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, it's okay to say hey I don't understand, मुझे ये नहीं आता, कोई आपको जज नहीं करेगा। And sometimes even with investors if you tell them that look this is an area, मुझे आपसे ask, जो ask की बात हो रही थी, सिर्फ पैसे नहीं होते, पैसे is just a very small thing that you can get, right? किसी ने आपको पैसे दे दिए, okay great, उसके बाद उसने हाथ धो लिया, उसने कभी आपको पलट के पूछा तक नहीं कि हो क्या रहा है, या उसने इतना पूछा मुझे प्रॉफिट ला के दो, सिर्फ ये पूछा उसने, ठीक है? So you need something beyond the invest Yeah. the money as well, ठीक है? वैसे Lack of पहले वाला केस, समर सॉरी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि आपको पैसे दे दे और कभी पलट के पूछे नहीं, तो आपको पूछना चाहिए कि उसने क्यों दिए ये पैसे और वो कहाँ से लाया। like in the sense that what I mean to say by that is there are people now Yeah. जो पैसे दे रहे हैं, ठीक है? Sometimes you find them, they give you the money, they will ask you of course eventually कि there है profit etc, but they're not willing to go the extra mile.
जो आपकी मेंटरिंग करनी है, जो आपके लिए नेटवर्क करना है, जो आप रिसोर्सेज चाहिए, मे बी ऑफिस स्पेस चाहिए आपको, कुछ भी जो भी, दे नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग बियॉन्ड मनी, राइट? सो अगेन यू हैव टू चूज योर इन्वेस्टर्स केयरफुली. अच्छा, फिर लैक ऑफ रिसर्च, हमने पहले भी बात की थी कि काफी दफा रिसर्च जो एलिमेंट होता है वो मिसिंग होता है. अच्छा, फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. ठीक है, बॉयज ने अर्निंग करनी होती है, they're the primary bread earners a lot of times. So that is a big huge reality. Parents, dealing with parents, with close friends, people telling you, are you crazy, why are you doing this? Okay, I know that we've got, well, we can talk about some other challenges after we've taken this call, I guess. Yeah, we can keep going. Yes, I Umar am is there. one. Umar takes me back to the radio times. You know, there was every radio channel has one guy who calls on every show, and Umar is one of such people on the quarantine series. Hi, Umar. How are you? I am a regular irregular. Huh? Actually, good to see you, Umar. Yes, I like that. Yes. How is everything? Ramadan Yeah. Kareem almost ending now. So Yes, mashallah. I just have one or two small questions. That this, when you create a project's feasibility, okay, feasibility report or something, how impactful it should, like what we study in the commerce and business, that the feasibility report should be like this, and you have to pitch it. Okay, so how much it is in real life? It is like similar to it, or maybe what we can make it differently, or and how much we should put the information in the feasibility report, like a success plan or roadmap. Okay, what it is, The and commercial. second, yes, and secondly, okay, what are the things after being rejected? What are the steps we can take to improve that and tune in that skill? What we can take away from it? Okay, this has happened, maybe I did not research much or something like that, or maybe my product is not novel, I mean novelty is not there or something like that. So how I can have this product differentiation and in an imperfect So, competition like that. So that is the ठीक question. ठीक तो है, पहला thank सवाल you, Umar. feasibility है. दूसरा, from what I gathered was कि जब आपको फेलियर हो जाए तो आप उससे कैसे सीखें, ढूंढे कैसे कि किस वजह से आप कामयाब नहीं हुए. ठीक है. अच्छा, उमर का सवाल भी और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सैयद हारिस का, ठीक है, जो कि उमर के सवाल से थोड़ा सा लिंक है, जो आपने सेकंड वाला किया था. सैयद हारिस पूछ रहे हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ द फीलिंग दैट इफ यू टेल देम टू मच मे बी योर आइडिया विल गेट स्टोलन. ठीक है, कि आपका आइडिया चोरी हो जाएगा. अच्छा, सीक्रेट सॉस आपने नहीं देना. जो आपके सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो आपका सीक्रेट सॉस है, वो नहीं बताना आपने, लेकिन उसको नहीं बताते हुए भी आप बाकी सब कुछ शेयर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि उनका आइडिया बहुत यूनिक है, बहुत नॉवल है, इससे पहले किसी और ने ये आइडिया नहीं किया, अगर ये बताएंगे तो वो चोरी हो जाएगा. ठीक है. फिर वो ये भी सोचते हैं कि अच्छा, ये जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं या और स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टू कॉपी इट. इंसान के पास जितने आइडियाज आपके पास है, उतने आइडियाज उमर के पास भी हैं, उमैर के पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास सिमिलर आइडियाज भी होते हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल दूंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब कॉफी प्लैनेट का खुला आउटलेट, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ओ दिस इज अमेजिंग. आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों ने सोचा होगा जो कि फूड बिजनेस में थे कि ओ हमने क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी हासिल की. ठीक है. सो आइडियाज लोगों के पास होते हैं. ऐसे मत सोचें कभी भी कि आपका आइडिया इज नॉवेल अंडर द सन. इट इज नॉट. What is going to happen if you share your idea more and more? So this in a way, Umar, comes back to your question as well. जितना ज़्यादा आप आइडिया शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फीडबैक मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका आइडिया स्ट्रेंथन हो जाएगा. अगर वो आइडिया चोरी हो जाता है, लेट्स टॉक अबाउट हारिस हियर, अगर वो आइडिया चोरी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है कि जल्दी चोरी हो गया. आपने सिर्फ बयान ही किया था, वो चोरी हो गया, विच मीन्स कितना आसान था इसको कॉपी करना. राइट. सो आपने कोई अपना वक्त नहीं जाया किया. So this is really important to understand कि आप जितना आइडिया शेयर करेंगे अपना. अच्छा, सीक्रेट्स, बट रिमेंबर सीक्रेट सॉस मैं नहीं कह रही. जो आपका फर्स्ट करो, आपने कोई अपना डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके अंदर आपने पीछे एक एल्गोरिथम डाली है, एंड दैट्स योर सीक्रेट सॉस. प्लीज डोंट शेयर द कोड. ओके, डोंट शेयर द कोड. सो आई एम नॉट टू शेयर द सीक्रेट अपनी सॉस. अपनी KFC की फिंगर लिकिंग रेसिपी और अपने कोक का जो खास फॉर्मूला है वो अपने पास जी रखें जी, जितना अच्छा, और उसके absolutely. अलावा आइडिया को फ्लोट करें ताकि फीडबैक ले सकें. वेरी गुड. Absolutely. ठीक है. अच्छा, अब आपके उस पे आते हैं. उमर देखें, जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, अगेन विल गो बैक, जब हम पिच की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे आपकी ऑडियंस क्या है और आपका मकसद क्या है. सो अगेन आई एम गोइंग टू से समथिंग व्हिच मे नॉट बी वेरी डिप्लोमेटिक. अगर आप गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोबेबली उनको बहुत ज्यादा मोटी चाहिए. ठीक है.
उसके उनको बहुत सारे अल्फाज चाहिए उसके अंदर से. सो लुक एट हु योर ऑडियंस इज. अच्छा, अब इफ वी टॉक अबाउट फिजिबिलिटी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए. फिजिबिलिटी रिपोर्ट करती क्या है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज सपोज्ड टू टेल यू कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हिच मींस कि सारा का सारा रिसर्च का एलिमेंट इम्पोर्टेंट है. अच्छा, फाइनेंशियल्स का एलिमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जो प्रोजेक्शंस आपने करनी है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, फॉर इंस्टेंस अगर मैं हबीब यूनिवर्सिटी के एग्जांपल पे वापस जाती हूँ, सो आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स फॉर हबीब. व्हेन वी प्रिपेयर्ड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हमें देखना था अच्छा कितने पेरेंट्स आएंगे, कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर कि वी विल बी एबल टू ब्रेक इवन इन हाउ मेनी इयर्स, राइट? सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. अच्छा, जो आपका सवाल है, अगेन look, if you are writing a feasibility report for me, I would say keep it as brief as possible. ठीक है? So जो words हैं उनको आप reduce करके बहुत ही clearly explain करें. अच्छा, एक example from the startup world which works really really well. So एक business plan होता है, एक feasibility report होती है, लंबे लंबे documents होते हैं. एक होता है lean canvas methodology, which is very simple. राइट, इट्स गॉट 9 डिफरेंट डब्बे, 9 डब्बे होते हैं उसके अंदर. हर एक डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ होते हैं जो कि उसके लिए रेलेवेंट है. पहला डब्बा आपका कस्टमर्स का है, कस्टमर्स कौन है. सेकंड डब्बा आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. नंबर 3 आपकी सोल्यूशन क्या है. नंबर 4 यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपकी. नंबर 5 आप चैनल्स क्या क्या यूज करेंगे उन तक पहुंचने के लिए. नंबर 6 आपकी क्या की मेट्रिक्स है, सक्सेस कैसे मेजर होगा. नंबर 7 कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी. 8 हो गया. नंबर 9 आपकी अनफेयर एडवांटेज क्या है. So what I'm trying to explain is कि एक ही पेज के ऊपर सिंपल फॉर्मेट के अंदर एक एक डब्बा है जिसके अंदर वो तमाम के तमाम फीचर्स उसके अंदर आते हैं. So what you need to make sure is कि आपकी feasibility report complete हो, सारे के सारे जो elements हैं they are there. But in terms of length, I mean, if you've covered the information in you know enough in a substantial manner, that's it. Don't go on. I mean, I don't think you So have KPIs and this KPIs, key performance indicators, we should put them or not, or key result areas like that kind of things. देखो आपने, हाँ एब्सोल्युटली ठीक है, बिकॉज यू डू हैव टू शोकेस हाउ आर यू गोइंग टू मेजर. सो जो मैं आपको लीन कैनवस में समझा रही थी, की मेट्रिक्स कहते हैं उनको. So in a feasibility report, you're going to say, okay, yes, these are the KPIs, these are the things that I will, you know, achieve, etc. Another thing that you do need to put in a feasibility report, which is important, is your risk mitigation. Right? Risks हैं क्या, वो आप foresee करोगे और फिर आप बता दोगे कि risk mitigation कैसे करोगे, right? So उसके लिए, if required, you put in a SWOT analysis or a pestle analysis, you know, and then you really go deep down. Competitor analysis is obviously going to be critical when you're trying to develop feasibility report. Yeah, so I hope that helps. Yeah, thank you, Umar, for joining in, for having the curiosity. This is the canvas. You can easily look up canvases that Samar is talking about. So here this is one is one. the business model canvas. There's another one called the lean canvas, which is again which is an adaptation of the same business model. Okay, so look at either one; they will still give you a lot of structure. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, अमर का दूसरा क्वेश्चन था अबाउट द प्रोडक्ट, कि हाउ कैन यू नो कि क्या इस प्रोडक्ट में खराबी थी या कैसे उसको इम्प्रूव करना है. एक तो थोड़ा सा उमर, इफ यू आर टॉकिंग टू पीपल और पीपल आर गिविंग यू फीडबैक, प्लीज आस्क देम द क्वेश्चंस, राइट? समटाइम्स दे डोंट आंसर, बट इट्स गुड टू आस्क. दूसरा जो बेस्ट चीज है ना जो आप कर सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, टॉक टू योर कस्टमर्स, राइट? So definitely talk to your customers and find out what it is that they want. So I can't stress research enough, because a lot of times what happens is आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम है वो, या आपने किसी और की, चलो एक आपके क्लोज फ्रेंड्स के अंदर या जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, एंड यू थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि मैसेज की प्रॉब्लम, बट वो आपने जाके उनसे मालूम कर. When you go and you sit with them, there are different, you know, techniques. किस तरह के आपने सर्विस रन करने हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करनी है, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन रिसर्च करनी है. There are multiple ways that you can do it. Mystery shopping करनी है, whatever. So there are multiple techniques. But the idea is, if you do the research, आपका product automatically will get developed in a way that the market wants it. So आपका time बच जाएगा, money बच जाएगा, आपका energy level बच जाएगा. Because अगर fail हो जाएगा, fail होने के बाद थोड़े से दिनों तक तो we are feeling bad ना. कुछ अर्से तक तो we are just like, oh, okay. But anyway, okay, thank you, Umair. Thank you, Umair, and thank you, Samar, for answering very comprehensively. आपके अपने अंदर भी, you want to protect yourself, and so not allowing criticism on your idea is your way, अपना तरीका है protect करने का.
ताकि आपकी है ना महफूज रह सके। सो बहुत स्ट्रेंथ का काम है। आप अपना आइडिया जब कस्टमर्स के साथ ही अगर गुफ्तगू में लेकर आए, टेस्ट करें, तो आप डिजाइन थिंक कर रहे हैं इन वन वे, एंड दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। यानी आप वही कर रहे हैं जो मार्केट को चाहिए। सलमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सलमान तो खुद बड़े स्टार है, आज तुम्हारा शो नहीं चल रहा। लोग कहते हैं हमारे फेसबुक पे ऑडियंसेस कम है, क्योंकि पता चला कि उनकी अपनी ऑडियंसेस खुद भी लाइव बैठी हुई है। गो ऑन, व्हाट्स योर क्वेश्चन सलमान? Thank you, Umair. Thank you, Samar. Okay, two questions. क्या emotional way of presentation is important? क्या जरूरी है? क्योंकि मैंने अपने competitions में देखा कि वहां पर जब emotional story create की गई, जिस तरह समर बता रही थी, तो वो she got the edge. वो win कर गई। और क्या ROI important है, statistics important है, और competition versus investors, मतलब competition में क्या approach होनी चाहिए और investors के सामने कौन सी चीज important है? क्या वो emotional story जिसका आपने जिक्र किया वो create करना important है, या फिर ROI, आपके statistics उनको क्या मिल रहा है, आपने ये बताना है। Second, आपने जो pitch का format बताया, what, why, what and how, should it be considered a format for presenting your idea of any sort? कोई भी किसी किस्म के भी आइडिया प्रेजेंट करने के लिए क्या इन्हीं 3 टूल्स को लेकर हम चल सकते हैं? थैंक यू। Okay, thank you very much, Salman. Very good questions. ठीक है। अच्छा, so जो formats की बातें हुई हैं, हमने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था शुरू में, so just go ahead and re-watch it. But yes, absolutely, जो why है, that's important. जब वो आप pitch deck की तरफ आते हो, so why becomes your problem, कि problem statement क्या है, the what is your solution, आपकी solution क्या है, how are you doing it becomes कि आपका magic या technology है behind your solution, कैसे आप वो deliver करोगे, what's your modus operandi, वो आप explain करते हो. And then of course customer traction is really important, marketing and sales is important, how are you going to reach your customers, social proof या traction जो है market के अंदर वो आपका important ज़्यादा, proof of concept कर चुके हुए हैं तब. उसके अलावा there are other important aspects. So for instance, जो आपकी return on investment है, business model, financials, these things are really important, right? So to answer your other question, जिसमें आप कह रहे थे कि is the emotional story important or the ROI is important? Both things are important, right? So जो emotional appeal है या जो story है, ठीक है? I wouldn't even look. So for Rumela, जो मैंने आपको Rumela का example दिया था, that was because she did something which was so powerful. ठीक है, उससे पहले वो क्या करती थी? I'll tell you her story originally. So she would always start her pitch by talking about 2005 का earthquake and what happened to her. ठीक है, and then we told Rumela, okay, you know what? You are so much more than that incident that happened, क्योंकि you rose beyond it. आपने उसको अपने पीछे फेंक दिया, right? आपके पास इतना बड़ा huge challenge था, you could walk and now you can't walk anymore. I mean, it's very difficult to imagine. ठीक है? Not to mention the pain that she went through, losing other family members as well. ठीक है, बहुत सारी चीजें. But she is actually gotten beyond it. So we told her that now your story has to be that story of resilience. That has to come out. So when we say emotional story, let me correct everybody. It does not have to be a sob story. ठीक है? So another one of our startups, उनका क्या हो रहा था? उनकी story थी, it's a health tech startup. So वो घर पे टेस्टिंग से लेके फाइंडिंग द राइट डॉक्टर्स फॉर यू एक्सेट्रा वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कोविड-19 का भी उन्होंने बहुत अच्छे से ट्वीक किया है अपने मॉडल को, आप सैनिटाइजर्स और मास्क और ये सब कुछ, हॉस्पिटल गाउन्स वगैरह सब कुछ सप्लाई. ठीक है. So anyway, so those are the good parts. The bad part was their pitch. So they started doing the business because they lost their aunt. ठीक है, उनकी aunt जो थी वो negligence की वजह से, डॉक्टर्स की negligence की वजह से she passed away. But initially we thought, okay, yes, that's a story that we want to hear because it's very personal and stuff. But then when he used to tell it, वो तो सब लोग depression में चले जाते थे. Everybody who would listen to him, we would get so depressed. He was looking so depressed talking about it. So we said, okay, let's tweak it. Tell me about the positive impact that you created in somebody's life. ठीक है, and उसकी बहुत एक अच्छी example थी. So a couple that went to different doctors, वो different doctors के पास गए, उनको advice मिली कि जो baby है, जो fetus है, उसको abort कर देना चाहिए because उसमें abnormalities है. Through MedSol, they conducted separate tests and it turned out that abnormality वो mal testing हो रही थी. ठीक है, वो गलत diagnosis हो गया था. And now the baby is born and alive. ठीक है. So the way I told them, I said, the first thing that you show on your presentation is that picture of that baby and you explain that story. So when we say emotional appeal, yes, it's important, but it does not have to be negative. अच्छा, एक और example दूंगी सेहत कहानी का. You may have heard of the startup. If you haven't, please look them up. Run by amazing, fantastic women founders.
in Karachi. Again, their example is really important कि किस तरह उन्होंने COVID की opportunity को utilize किया. So उनकी जो पहले जो pitch deck होती थी, maybe they've transformed it obviously. It would start with 3 stories of 3 different women, जिसमें एक जो है beneficiary है, उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मौजूद, रूरल एरिया में रहती है, उसको किस तरह से हेल्थ फैसिलिटेट करता है. वुमेन लर्न हाउ टू बी अ डॉक्टर, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, वो कैसे टेलीमेडिसिन के थ्रू अर्निंग अपनी इंक्रीज करी. एंड देन देयर वाज अ थर्ड एस्पेक्ट एज वेल. सो दे वर डूइंग अ 3 story kind of a format, right? I mean, you can just choose one as well. So the emotional appeal is important. अब जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो इम्पैक्ट इन्वेस्टर हो, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उसके लिए मानी रखती हो, दे आर रियली इंटरेस्टेड कि पर्पस हो, प्रॉफिट जो है मेजर करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ पीपल एज वेल, द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एक्सेट्रा. दे डू वांट टू नो कि उनके पैसे कैसे वापस आएंगे और कब वापस आएंगे एक्सेट्रा. सो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले जो बेटे हैं वो बहुत ठीक है. Having said that, all of us I think realize कि जो financial projections हैं, they are only that. Unless you've already done a lot of pre-data. ठीक है, आपने data analysis data को gather करते जाना है. So the minute you launch, उससे पहले you should know what your metrics are. आपने measure क्या करना है. So as an example, and then we can look at Abdullah's long question. As an example, another one of our startups called Forry, FOWRRY, which is a delivery. Excellent amount of data that he collects. कितने customers हैं, कौन से time पे वो order करते हैं, कितने. Yes, the problem with looking at Abdullah's question is that then nobody can look at. What? Abdullah's question? हाँ, ठीक है. So Salman, does that answer your question? Questions? Okay, Salman is still not. I'm not sure. Are you satisfied? Okay. Okay, he's disappeared. All right. Should we look at that long question? Did you want us to look at it? Okay. Thank you, Samar. Thank you, Samar. I would like you to, and I was just giving a disclaimer. ये आ गया सवाल. What do you do when you don't have a different? Right. So standard pitch deck here, we definitely need to change it. How could we differentiate it, right? So look, at the end of the day, आपके जो भी आपके customers हैं, I mean, I read it, but if you want to, what do you do normally, Umair? Do you read out the entire question? So as a CFO, I'm heavily involved in business development. I just want to show you the question and I think it's a very simple one that is. Oh, sorry. Yes. Okay. Which are value add in comparative edge services to multinational corporations. My question is that we have a standard pitch. What is all? Hello, Samar. ठीक है. So differentiating factor क्या हो सकता है? So I think again you have to go back. आपके जो FMCG वाले clients हैं, उनकी क्या requirements हैं? ठीक है. What are they looking for? जो आप उनको sell करना चाह रहे हैं, So look, I don't know enough about your clients at this point in time, okay? But the way to differentiate it would literally be to do a thorough research on your client and to find out what is it that they're looking for. Key problems kya hai? Try and understand their problems. Literally apply the same approach. What is it that they're trying to achieve, and how are you the best firm to help them achieve that? Your product is the best product to help them achieve that. Try to do that matching, right? And it's not that difficult. So you'll be able to एक दफा देख लेंगे. अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो? If you have some link within that organization, right? So do a little bit of try and probe them, get them to answer certain questions for you, so you can tweak your pitch accordingly. Wow. And I completely agree. You must tweak your pitch. Yeah, absolutely. Talk to them, right? कोई ना कोई तो जिसको काम करवाना है, right? Companies and executives and senior folks like it if you really start with asking questions instead of going with your pack. It's a good one. Also, differentiation pe Samar, it's not just the product, because many times product is the same. It's the story that you have for the product that could be different. It's how you make it.
It's the why that Samar started this conversation with, not just the what you make, but why do you make the way you make it or make what you make. Samar, thank you very much. This has been very very pack loaded आप माशाल्लाह. और बहुत सारे लोगों ने एक्नॉलेज भी किया है कि किसी ने कहा बंदी चलती रहती है फ्लो के अंदर. And I must say that you have a beautiful flow and very very well backed with your experience. We've already crossed the time, so I'd like to bring this to a close, Samar. We have two questions left. I'm going to give you a choice here. Would you like us to look at a winning pitch deck, or you would like to address fear, insecurities, and risk? So I think the winning pitch deck, people can look at themselves. I'm quickly just going to tell them which one. Recommend कर दें. हाँ, वो खुद से देख लें. Airbnb के जरूर देख लें आप लोग. ठीक है. There are, you'll find Airbnb की बहुत simple है, very nicely done. Take a look at it. What to do with fear, insecurities, and risk? I think that's really important. And again, I think there are a couple of things. एक तो ये कि you have to understand आपका fear, insecurity, risk है क्या? Is it financial insecurity जो आपका risk है? जो आपका सबसे बड़ा fear है? Is it the fear of failure? जो सबसे important है कि मतलब लोग क्या कहेंगे? What is going to happen? मेरी अपनी family क्या कहेगी? How will I face myself in front of the mirror? What is your fear? तो आपने वो understand करना है. Number two, you have to understand yourself better. Okay, what is your capacity? So अगर financial risk, let's talk about a business. ठीक है, अगर business fail हो जाता है, what is your own personal capacity to survive, to rise up again? Okay, and you are the better judge of that. Nobody else can tell you. You know yourself much better than anybody else out there. ठीक है, so this is important. Now, why is this important? Because obviously, जब आप business start करने के लिए जा रहे हैं, जब आप young entrepreneur, new entrepreneur, entrepreneurial gig start करने के लिए जा रहे हैं, question आता है, आप job को maintain करते हुए new business start करें, या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही वो once it takes a life of its own, then you're going to leave your job, or do you burn all your bridges and jump? Right? So, and different people have different approaches. I can tell you what I did. I took the plunge. I waited. The day I found out कि हमारी Uncharted, which is an American institution, उनके साथ partnership हो गई है to bring 2 international licensed programs, to Pakistan. That's the day I resigned. Okay. अलग बात है that my supervisor didn't accept it. She wanted me to rethink it, etc. So she was fantastic. She gave me more of an opportunity, but I knew that this is time for me to go. Okay. The other way to gauge it, जो मेरे case में था, burning question. Okay. Is this something? Is this like a burning thing which keeps you awake at night? Right? Do you find yourself waking up again and again because this is giving you trouble sleeping? आपके mind में बार-बार idea आपको तंग कर रहा है to the extent कि आपकी नींद खराब हो रही है. अगर आपकी नींदें खराब हो रही हैं आपकी idea की वजह से, it is time. Where they are, right? To do it. It is time. अगर किसी आइडिया की वजह से खराब हो रही है, it's time to launch that business. किसी शख्स की वजह से खराब हो रही है, it's not time to launch into action. Please rethink that. It could also be very nice. Your neighbor's wife is doing it, or somebody else, or Umair has become an influencer, and now you think you need to do this as well, become a trainer overnight. Okay, you can get inspired by people, but then there are so many other things that you have to put in place. Okay, it's just a very simple thing, right? So imagine, I want everybody to imagine that they are actually birds. Okay, so जो कोई भी चिड़िया होती है, चिड़िया ने उड़ना है, उसकी क्वालिटी है ना कि चिड़िया ने उड़ना है. तो सिमिलरली फॉर एज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन चिड़िया ने जब उड़ना है तो पहली दफा तो उसने वो फ्लाइट करनी है ना, फर्स्ट फ्लाइट. देयर इज दैट फैक्टर ऑफ फियर. उसको उड़ने भी आता है, ठीक है, उसके मतलब विंग्स हैं, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, बट दैट चिड़िया स्टिल हैज टू टेक दैट फर्स्ट डाइव. सो सिमिलरली you have to take that plunge at the end of the day. Whether you are trying to be a scuba diver, you still have to jump off that cliff. So you do have to jump off that cliff. Now it's You've got to do that. You've got to. Absolutely. Looking at yourself, you have to decide: are you going to jump after creating a safety net for yourself? सारे अपने friends को, mentors, advice हासिल करके that's your safety net उस तरह करोगे, or are you just going to say that's it, I'm just going to plunge? So different approaches. Wonderful. Thank you. Take the plunge, says Samar. That's what she did when she found out that it's happening and there was a burning desire. And she's not only taught us to follow that burning desire, but also how to present it
so that it's not burning everybody up. It's also making sense and taking you somewhere. This was Samar. Samar is available. Epiphany team is wonderful. Here is their website. They're very, very active here. जिनको reach out करना है अपने से अब्दुल्ला यासिर आपके सवालात हैं, you can reach out to Epiphany directly. Thank you, Faiza. Other regulars, thank you, Samar, firstly, for joining us and for taking on the show in such a beautiful way and creating some remarkable guidance here. I'm grateful, honored, and a lot of people have appreciated you've added some true value here. Thank you for Thank doing you that. so much, Umair. Thank you. Thank you. This was Samar Hassan. Thanks once again from Epiphany. Thank you all of you, Yasir, Zia, Faria, Shahan, बहुत सारे लोग जहां जहां से ज्वाइन किए. जाने से पहले आप जरूर लिख के जाएंगे आपने कहाँ से हमें ज्वाइन किया. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो प्लीज अपने बिजनेस की भी वेबसाइट डाल दें. इट्स गुड, और लोगों को पता चलता है और हमें भी पता चलता है कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं. इस गुफ्तगू में समर से हमने बात की. समर ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है. Boys and girls, please do look at this again if you are looking at making your page. She has said many things. I must tell you that this is the kind of advice that I hear from many, many practitioners, investors. She's spot on with the things she has said about research, about less being more, about working on your theatrics, bringing a demonstration, showing a stat, not just being stuck on the problem, but being the problem solver. हमें structures दिए हैं आज की गुफ्तगू के अंदर, कुछ recommendations दिए हैं, pitch decks आप क्या देख सकते हैं. I hope this was valuable to you. Please do give us your feedback. This was the 50th episode of the quarantine series. I'm very, very happy with that. Halfway done. 50 more to come. I don't know who all, when all, but very soon, inshallah. Until next time. Thank you.